हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, टी ए सक्सेस सीरीज़ में खुश आमदीद। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट गेस पेपर लेके आया हूँ। इंशाल्लाह ये पूरी बुक का निचोड़ है और इंशाल्लाह इसी में से ही पेपर आएगा। चलिए शुरू करते हैं टी ए सक्सेस सीरीज़। तो आज हम शुरू करते हैं गेस पेपर। यूनिट नंबर 1 जो बटन है, इसके इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला है व्हाट वाज रिटन ऑन द कार्ड गिवन बाय मिस्टर स्टोवेट, ये आपने अच्छे तरीके से करना है। दूसरा है व्हाट वर द आर्गुमेंट्स नॉर्मा गेव टू हर हस्बैंड टू एक्सेप्ट द ऑफर। आगे व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ ऑथर्स लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, ये आप देख लें अच्छे तरीके से। ओके हो गया। इसके आगे हम करते हैं यूनिट नंबर 2 के शॉर्ट क्वेश्चन हम शुरू। यूनिट नंबर 2 के क्लियरिंग इन द स्काई, इसके शॉर्ट क्वेश्चंस। पहला है बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, वेयर डिड द ओल्ड मैन टेक हिज सन। सेकंड है व्हाई हैड द ओल्ड मैन प्लांटेड हिज सीक्रेट गार्डन। थर्ड है व्हाई डिड द ओल्ड मैन टेक द स्टीप पाथ। ये आपने सेकंड के शॉर्ट क्वेश्चन है, आपने इसे अच्छी तरीके से याद कर लेना है। अब हम थर्ड चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन करते हैं। Dark they were and golden eyed. इसके short questions. Why did Harry want to go back to Earth? How dangerous could a Martian virus be? और थर्ड आ गया what did Harry feel when he landed on the Mars? ठीक है, ये आपके 3 चैप्टर के क्वेश्चन हो गए हैं। अब चौथे चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चंस। थैंक यू मैम। First, how did the boy look physically? Second, what was the reaction of the woman? Third, what happened to the boy when he tried to snatch the woman's purse? ये आप अच्छे तरीके से 3 क्वेश्चन याद कर लें। मैं सिर्फ 3 दे रहा हूँ कि आप अच्छे तरीके से याद कर लें। 5वां चैप्टर्स द पीस ऑफ स्ट्रिंग, इसके इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस जो है व्हाई डिड मलाना एक्यूज हैवियट ऑफ पिकिंग द लॉस्ट पॉकेट बुक। दूसरा है व्हाई डिड जॉर्ज गिव द पॉकेट बुक टू हिज एम्प्लॉयर। What was written on the grave of Mr. Hibbert? ये आपने अच्छे तरीके से याद कर लिया। अब यूनिट नंबर 6 के शॉर्ट क्वेश्चन द रिवॉर्ड के। पहले आ गया What were the arguments made for the function of inauguration? How did Gorgias achieve his ambition? Third, what were the feelings of Gorgias of inauguration of the post of court acrobat? ये आपने अच्छे तरीके से याद कर लेना है। अगर द यूज़ ऑफ फोर्स, ये है व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ पेरेंट्स ऑन द अराइवल ऑफ डॉक्टर। व्हाई डिड द डॉक्टर कॉल द सिक गर्ल बाय हर फर्स्ट नेम। व्हाई डिड द पेरेंट्स रिब्यूक द चाइल्ड, ये भी आपने अच्छे। यूनिट नंबर 8 गुलिस्तान ऑफ सादी। व्हाई डिड द स्लैब बिगिन टू क्राई एंड ट्रेम्बल। व्हाई डिड द काजी इशू अ डिक्री टू शेड द ब्लड ऑफ अ बॉय। What was the advice given by Nashirwan to his people? 9 कर लेते हैं हम। ये है what did the quack do with the old woman? What was the punishment inflicted upon the quack by the villagers? Why did the quack come back to the camel man? ये भी आपने अच्छे तरीके से याद। आगे आ गया यूनिट नंबर 10 A mild attack of locusts, इसके शॉर्ट क्वेश्चंस। पहला है what was the condition of trees? Why did the farmer prepare piles of wood and grass in the field? What was the desire of every farmer in a mild attack of locusts? अब 11वां चैप्टर आ गया I have a dream। इसके what are the qualities of a veterans of creative suffering? What should be the creation of judgment of a person? According to Luther's dream, what changes freedom would bring the state of Mississippi? ये भी आपने अच्छी तरीके से याद कर लेने हैं। 12वां चैप्टर द गिफ्ट ऑफ मैजिक। Why did she sell her hair? Why did Jim sell the gold watch? Who were the magic? अगर यूनिट नंबर 13 God be praised। How much did the Maulvi collect on every day and what did he say to his followers on this occasion? Who is Chaudhry Fateh Dad?
डिस्क्राइब मौलवी अबुल्स अपीयरेंस, ये भी आपने अच्छे तरीके से याद किया। नंबर 14 ओवरकोट। Why did the driver of truck speed away after the accident? What was the condition of a young man when he was taken to the hospital? What did the coat of a young man symbolize in the lesson overcoat? Unit number 15. The angel and the author and others. Short question important. What does the author like about Christmas? Why are the noble deeds always a great joy for the author? ये भी आपने दो क्वेश्चन जो है ना इनको अच्छे तरीके से प्रिपेयर। एट व्हाट पॉइंट ऑफ जर्नी इन हिज ड्रीम डिड द ऑथर हेयर द थ्रोबिंग साउंड ऑफ विंग्स? ये तीसरा क्वेश्चन याद कर लेना आपने। आगे आ गया प्ले, आ गया हीट लाइटनिंग, इसके शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे। हाउ डिड द सेकंड मैन एक्यूज द फर्स्ट मैन ऑफ लाइंग? व्हाट इज द गर्ल्स इंप्रेशन अबाउट द सेकंड मैन? व्हाई डिड एंड शी accompany the second man? ये इस प्ले के बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। विजिट टू स्मॉल प्लैनेट का शॉर्ट क्वेश्चन। हाउ डज क्रीटन प्रूव हिज एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स? राइट 5 sentences. How much more advanced is the civilization of Cretan than that of Earth people? Can the people of Earth compete with the people of Cretan? ये तीन इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं, इन्हें आपने अच्छे तरीके से। आगे आएगा तीसरा प्ले, आएगा द ओस्टर एंड द पर्ल, इसका शॉर्ट क्वेश्चन। हाउ मच हैरी प्रेज फॉर हिज बार्बर शॉप? What did Clay find near Black Rock? How much Harry charged for his cuts? ये तीन शॉर्ट क्वेश्चन आपने अच्छे तरीके से याद कर लेने हैं। अब आगे पोएम टाइम्स आ गए, मैंने थोड़ी सी पोएम्स लिखी कि आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लें। पोएम टाइम्स के शॉर्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम? हु इज़ द ऑथर ऑफ द पोएम? ये इसके इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जिन्हें आपने प्रिपेयर करना है। ये पोएम जो मैंने चूज़ की है वो है द होलो मैन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पोएम है। इसके हु आर द होलो मैन? What does the poet say in the last stanza of the poem? What is the theme of the poem The Hollow Man? इसका मतलब सेंटर आइडिया आपने बताना है। फिर आगे मैंने जो चूज़ किया है वो लेयर भी बहुत इंपॉर्टेंट पोएम है। इसके है ब्रिंग आउट द मैन और आइडिया ऑफ लेयर, मतलब सेंट्रल आइडिया बयान करना है। हु रोट लेयर, इसका राइटर का नेम लिखना है। ये मतलब राइटर जिसने वो लिखी है उसका अपना नेम लिखना। बहुत इंपॉर्टेंट पोएम आ गई रुबाइयात, इसके इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं। What according to Allama Iqbal is worse than slavery? What has made the efforts of Muslims fruitless? Point out 2 factors which according to Allama Iqbal are the cause of downfall of Muslims. यहाँ तक हम पॉइंट्स के शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट होंगे जिन्हें आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। हम चलते हैं लेटर्स की तरफ। मेरी पर्सनल राय है कि आप एप्लीकेशंस करें, क्योंकि लेटर्स थोड़े बड़े होते हैं इस वजह से उन्हें लिखना मुश्किल, तो आप एप्लीकेशन पर फोकस करें। लेकिन जिन्होंने लेटर किए हैं मैं उनके लिए भी गेस दे देता हूँ। पहला लेटर, राइट अ लेटर टू योर फादर। Write a letter to your father explaining to him the cause of your failure in the examination. Write a letter to your younger brother and advise him about his studies. Write a letter to your father requesting him to increase your monthly allowance. Application आ गई है। An application to the principal of your college for scholarship, फी कंसेशन वाली आ गई है, करेक्टर सर्टिफिकेट वाली आ गई है। मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टोरीज ये हैं। स्टिचिंग, टाइम सेव 9, ट्राई अगेन, माइट इज़ राइट, काइंडनेस नेवर गोज अनडिवाइडेड। मैंने स्टोरीज़ के लिए एक ख़ास वीडियो बना रखी है जिसमें सिर्फ एक स्टोरी लिखें तो आपके सारे जितने भी मोरल्स हैं वो कवर हो जाते हैं। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो आप जाके वो वीडियो भी देख लें। अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़। और प्लीज़ मेरा चैनल का नेम है लॉजिक स्टडी बाय TA, आप प्लीज़ उसे भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा।